watching the Tuesday edition of 6 Stories at 6, and I'm Rakshita Mishra with you. We start with the Tripura, the student being attacked in Tripura, the Tripura student murder case, viewers, how the police has dragged its feet on filing the FIR, and then what happened was a denial of a racial attack. Viewers, the family has spoken to Republic TV and rejected the police's claim. Story number 2 on 6 Stories at 6 tonight is how Temjin, BJP leader Temjin and Nagaland minister has torn into the Bangladeshi jihadi leader's threats. The empty threats on Shiliguri corridor on the chicken stack. We'll tell you what he said. Story number 3 on 6 Stories and 6 is Republic TV's latest ground report on the Aravalli investigation. Republic TV is unrelenting in its coverage, and it exposes how illegal mining continues right under the nose of the government. Free run for the Mafia, viewers. Story number 4 is the battleground Bengal. It's Amit Shah versus Mamata Banerjee on SIR, on infiltration, border fencing becoming a major flashpoint. Mamata Banerjee questions BJP, says, asking if it was a BJP that carried out the Pahalgam attack. Story number 5 on the show is the latest survey, the land survey in a cemetery, in a graveyard of Sambhal, with the district being on high alert once again. And finally, we get you the latest escalation between Ukraine and Putin, as Moscow alleges that Putin was targeted last night in an attack from Kiev. And we get you all that and much more. But first, the news from Dehradun, viewers. There is a development coming in the brutal murder of Anjel Chakma, the 24-year-old student from Tripura. Anjel was killed by a group of youth who first hurled racial abuses at him and at his brother Michael. Now, Dehradun police outrightly rejects the racial angle in this case. Watch this report to know more. Anjel Chakma, a young 24-year-old with dreams of a bright career and with hopes of achieving big in life, was brutally killed after allegedly being hurled with racial slurs. The brutal murder has drawn the ire of the citizens of the country, with protests and candle marches in northeast India. In a major development to this brutal racially motivated murder, the police has completely struck off the racial angle, saying both the victim and one of the accused are from the northeast. प्राइमा फैसी एक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, और जब कंप्लेंट आती है और जब कंप्लेंट में जो एलिगेशंस होते हैं और अगर लगता है कि वो डिले उसमें काफ़ी एक दिन का हुआ है, तो उसके बाद और जब कंप्लेनेंट द्वारा खुद भी उसमें आप मेंशन किया गया कि उसमें प्रिलिमिनरी जांच, मतलब जिसे कहते हैं सूक्ष्म इंक्वायरी करके उसमें कर लिया जाए, और उसमें जो एलिगेशंस थे उसको देखते हुए उसका जो नए कानून है 173 BNSS में, उसमें गेस्टेड ऑफिसर से एक परमिशन लेने के बाद उसमें प्राथमिक जाँच की गई। उस जाँच में घटनास्थल का निरीक्षण और हॉस्पिटल जाकर सारे फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया, और कलेक्ट करने के बाद घटनाक्रम में उसमें FIR रजिस्टर्ड कर दी गई। जो मेडिकल प्राप्त हुए थे उसके आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शंस को इसमें इंक्रीज किया गया था, चूँकि जो सीरियस उसमें इंजरीज थी, और इसके बाद चूँकि अननोन अक्यूज थे तो उनको आइडेंटिफाई किया गया, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद 5 लोग की अरेस्ट की गई। Speaking exclusively to Republic, Momen Chakma, who is Anjel Chakma's uncle, refuted the claims made by Dehradun police, saying the police is diluting the case. ये रेसिज्म का कोई एंगल नहीं है। ये मेरे माइकल ने मुझे पहले ही बता चुका है, मतलब उन लोग के साथ हम लोग ने, और FIR में भी मेंशन किया हुआ है ये जो रेशियल कुछ हुआ है। मतलब उन लोग को पहले वो लोग बोल रहे थे चिंकी पोंकी करके, मतलब चाइनीज बोल के, और गाली भी कर रहे थे। तो जब माइकल ने रेसिस्ट किया तो जाके तो अटैक हुआ ना। ये लोग तो मतलब केस को पूरा डाइल्यूट करना चाह रहे हैं पुलिस, क्योंकि मतलब ये रेसिज्म तो मतलब बहुत ज्यादा मुद्दा हुआ ना, इसलिए उन लोग चाह रहे हैं मतलब इसको मतलब दबा के दूसरा एंगल में लेके जाने के लिए। लेकिन मेन मुद्दा वही है, उन लोग को पहले से ही वो लोग, माइकल मुझे पहले से ही बोल चुका है, मतलब पहले से ही वो बात कर रहा, जब से मिले तब से बोल रहा है, मतलब उन लोग को मॉक किया करके। The matter has also reached the apex court via a PIL, which demands the recognition of racial violence against citizens from northeast India as hate crime. The PIL has also urged for special police units and legal reforms for northeast citizens.
While Uttarakhand CM has assured of fair trial and speedy justice for the victim's family, the family is not satisfied by the police's actions. पुलिस पूरा पहले से ही वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं वो लोग. उन लोग ने डिले किया एफआईआर लेने से. उन लोग ने जब माइकल और उसका दोस्त 10 तारीख को मतलब गए थे मतलब पुलिस में एफआईआर लिखने के लिए, उसमें सीधा लिखा है मतलब उन लोग को जो जो बोला माइकल ने पहले से ही बोल रहा है मतलब उन लोग के साथ रेसिज्म हुआ है. जब वो एफआईआर में भी मेंशन है वो चीज सर, आप शायद आप लोग ने नोटिस किया होगा. तो उन लोग को पूरा डायरेक्ट भगा दिया. पहले उन लोग एप्लीकेशन लेके गया था. उन लोग ने पूरा उसको बोला तुम लोग को जैसे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हजारों लोग आते हैं, गवर्नमेंट उन लोग को कुछ मतलब कुछ टाइम दे उन लोग को, जैसे 2 days 3 days. अगर उन लोग से वो नहीं हो रहा है तो नहीं तो सीआईडी को छोपे, नहीं तो एक एसआईटी फॉर्म करके दे दे अगर उन लोग से नहीं हो रहा है. The National Commission for Scheduled Tribes, that is NCST, has also issued notices to authorities in Uttarakhand and have sought a detailed action taken report within 3 days. Notices have been issued to the Uttarakhand DGP, Dehradun DM and SSP Dehradun. Notice has also sought an explanation for the delay in registering the FIR by the police. Not just the NCST, but even NHRC has taken cognizance of the matter and notices have been issued to the state government. The Commission has further directed the Chief Secretary and DGP Uttarakhand to ensure the safety and security of students from the Northeast across the state. Now, Nagaland Tourism Minister and BJP leader Temjin Imna Along has issued a strong response to threats from Bangladeshi radical elements over India's strategic Siliguri corridor, the Chicken's Neck. Now, the recent remarks by several of Bangladeshi figures, that includes claims by the interim government head also, Muhammad Yunus, projecting Dhaka as the guardian of the ocean, threats by a former army officer to occupy India's northeast, and statements by political leaders, the jihadi leaders hinting at support for separatists, they've all heightened concerns. But what Dhaka must remember is that India has and will continue to take an uncompromising position on the northeast. Listen to what Temjin had to say as he dares Dhaka on the Siliguri corridor. Nagaland Tourism Minister and BJP leader Temjin Elong has responded strongly to threats from Bangladeshi radical elements to cut off India's chicken's neck. ये सब तो होना ही था, मगर बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं. हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में. हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है. अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है. ये मीडिया के शब्दों हैं. हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय है हम. The response comes amid repeated provocations by Dhaka on the critical Siliguri corridor. Wedged between Bangladesh to the south and west and China to the north, the Siliguri corridor is barely 22 kilometers wide at its narrowest point, linking 8 northeastern states with mainland India. New Delhi's response has been firm to Bangladesh at a time when the latter has repeatedly tried to provoke. In March, their interim leader Muhammad Yunus had addressed Chinese business leaders, claiming Dhaka as the only guardian of the ocean. A former army officer had also issued threats saying India's northeast would be occupied if India attacked Pakistan. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma too had flagged the concerns surrounding the chicken's neck. Who are the people in the chicken neck? Everybody say chicken neck, 22 kilometer, 22 kilometer. But everybody who is there in the chicken neck and in the 10 kilometer vicinities of chicken neck in the Indian side, everybody have come from Bangladesh. So tomorrow, if government of Bangladesh says that let me take over the chicken neck, now the local people will say please come.
because they themselves have come from Bangladesh. Bangladesh continues to be served a reality check by India. After Republic's campaign on the Aravalli, the Supreme Court stayed its earlier order, bringing focus back to the ground realities. Republic now brings you a fresh ground report from Adarsh village in Rajasthan's Sirohi district, where residents allege that mining activity has damaged homes and infrastructure, with repeated blasts causing cracks and structural collapse. Even as villagers seek answers, authorities in Jaipur have stepped up action against illegal mining, seizing vehicles and machinery involved. Here's more. Barely days after Republic's nationwide campaign, highlighting concerns around the Aravalli range, the Supreme Court put a stay on its earlier order related to the issue, bringing renewed focus on ground realities. Republic now brings you an exclusive ground report from Adarsh village in Rajasthan's Sirohi district. We are standing near a giant mining company which is supposed to be the second largest in the state of Rajasthan. It is nationally acclaimed cement producing company and it is also in the area of mining. We have been walking through this entire lane of the Adarsh village and several homes have cracks across the walls and all the rooms in their entire homes. Mining in and around this area has severely impacted both livelihoods and infrastructure in the nearby villages. The damage is so extensive that several houses here have been reportedly been rebuilt 2 to 3 times over the last few years. Villagers allege that the repeated complaints to authorities have gone unheard. आगे देखिए ये दरारें तो जब से हमने जन्म लिया है तब से देखते ही आ रहे हैं कि घरों का जलजला इस प्रकार होता है कि लोग तीव्र गति से होता है तो लोग दौड़ के पहले तो बाहर आते हैं। कईयों के घर गिरे भी हैं, लोगों ने अभी नवनिर्माण भी कराए हैं, तो आपने भी खुद देखा होगा कि लोगों के घरों में कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। लोगों के घरों की छतें तक गिर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। कुछ लोगों की मतपेदी से काम चला रहे हैं। Some residents have also been employed by the mining company on a contractual basis. जी हमारे सब जन्म से ये मकान है। अभी मकान बनाया देखो सब ये फट रहा है, ये ब्लास्ट होता है, ये पूरा यहाँ से जो वहाँ ऊपर तक सब तक देखो सब ठिकाने। कितने सालों से फैक्ट्री तो यहाँ हमको मकान बनाया 90 में बनाया था ये तभी से लगाया। बनाने के बाद में वो सब वो ब्लास्ट होता रहता है ना, फूटता है। कितनी बार बनाया अपने घर? ये तो 2 बार बनाया है। हाँ हाँ। इतनी दरारें आती हैं? हाँ इतनी दरार आती है। According to the residents, mining blasts occur 2 to 3 times a day, triggering tremors that shake the entire village. Amid rising concerns, district authorities in Jaipur have intensified action against illegal mining across the Aravalli region. On the directions of the district collector Jitendra Kumar Soni, joint teams of the district administration, mining department and police carried out coordinated raids across multiple locations. Several vehicles and heavy machinery involved in illegal limestone and sand mining were seized. This ground report once again brings to the spotlight the larger debate of development versus environmental protection. Republic continues its nationwide campaign to save the Aravallis and to expose the mining mafia. Now, with 2026 West Bengal Assembly elections months away, the political temperature in the state is already soaring. Home Minister Amit Shah's aggressive pitch on infiltration and development has drawn a fierce counterattack from Chief Minister Mamata Banerjee, who has dismissed the allegations as election theatrics and accused the BJP of targeting Bengalis in name of security. There's more in this report. Politics in West Bengal is heating up. With the assembly elections scheduled for next year, the political circles are already abuzz with war of words between the two political parties. Union Home Minister Amit Shah has launched a sharp attack on Chief Minister Mamata Banerjee during his second leg of the Bengal visit. He blamed the Chief Minister for abetting infiltration of Bangladeshis.
क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी। Addressing a press conference, Shah also assured the people that the BJP would end infiltration if it comes to power in the state with a 2/3 majority in 2026. मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। Not just infiltration, development of the state of West Bengal was also the focus of Shah's attack against Mamata. आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। The chief minister has hit back just as hard, saying that Shah's statements are nothing but election drama as polls draw closer. বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছেন বাংলাদেশি। 1947 সালের আগে তিনটে দেশ তো এক ছিল। ওপার বাংলা থেকে অনেকে এপার বাংলায় এসছে, এপার বাংলা থেকে অনেকে ওপার বাংলায় গেছে, পাঞ্জাব থেকে অনেকে পাকিস্তানে গেছে। দুটো রাজ্য তো সাফার করেছে, একটা বাংলা আর একটা পাঞ্জাব, মাথায় রাখবেন। আজকে বলছে এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী হাঁটাবো। এতদিন কি করছিলেন? দুধ ভাত খাচ্ছিলেন? With the battle lines clearly drawn, Bengal is once again the stage for a high voltage political showdown. And the spotlight is back on Sambhal in Uttar Pradesh. Now the district administration has launched fresh crackdown over alleged illegal encroachment on land that adjoins the Shahi Jama Masjid. Now at the center of the controversy is now an 8-bigha graveyard where officials claim government land was occupied and permanent structures were raised over the years. A detailed survey has now revealed 22 houses and shops on the disputed land. Notices are set to be issued, giving occupants 15 days to present documents, failing which demolition action might follow. There's more in this report. The security grid has been ramped up in Sambhal. At the center of the controversy is an 8-bigha graveyard adjacent to the Jama Masjid. A survey was initiated after complaints were received of alleged illegal encroachment on cemetery land. The Sambhal administration has stepped up action over the encroachment. ये लगभग 4200 स्क्वायर मीटर की लैंड है जो आप देख रहे हैं, जामा मस्जिद से लगी हुई लैंड है। इस लैंड पर ये शिकायत मिली थी कि लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान इस पर बना रखे हैं। ये वर्ष 2005 के आसपास ये कब्जे कराए गए और उसके बाद इन लोगों ने इस पर पक्का स्थायी निर्माण कार्य कर लिया और इसके बारे में एक शिकायत मिली थी। उस शिकायत के क्रम में आज ये पैमाइश हो रही है। इस पैमाइश में जितने लोग गलत पाए जाएंगे, जितना अवैध कब्जा पाया जाएगा, उस पर सख्त बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। After the survey, authorities have revealed that 22 houses and shops were built on the cemetery property. को पहले भी सर कारण बताओ नोटिस आप लोगों ने भेजा था, क्या कुछ लोगों के रिप्लाई आए? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि उनके पास नक्शा है, दस्तावेज है, ये किसी ने किसी से खरीदा, इस तरीके की बातें वो दुकानदार जिनके घर बने हुए वो कर रहे हैं।
देखिए, नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि सबको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। हम सबको सुनेंगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो गाटा संख्या 32/2 है वो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। कब्रिस्तान कब्रिस्तान के रूप में रहेगा और किसी प्रकार का खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। What began as temporary shops gradually turned into permanent constructions, with illegal constructions dating back to almost 2005. Fresh notices will be served, giving encroachers 15 days to present documents in their defense. The administration has also written to the Archaeological Survey of India to verify boundaries and identify any encroachments on ASI land. संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश होनी है, जिसको लेकर सिक्योरिटी अलर्ट है और सिक्योरिटी अलर्ट के बीच में ड्रोन से इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। और तस्वीरें मैं आपको ड्रोन की दिखा दूं। विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद के आसपास संकरी गलियां, ना सिर्फ संकरी गलियां बल्कि घर की छतों पर किस तरीके का मूवमेंट है उस पर खास तौर पर नजर जो है वो रखी जा रही है और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। 24 नवंबर 2024 की जो तस्वीरें थी, घर की छतों से पथराव जैसी तस्वीरें देखने को मिली थी, प्रिकॉशनरी, क्योंकि इस पूरी जगह पर जो एक तरीके से घर बने हुए बेहद संकरी गलियां हैं। और इस ड्रोन के जरिए आप देखेंगे कि हाई राइज यानी कि जो घर यहाँ पर बने हुए हैं गलियों में किस तरीके का फुटफॉल है, हर एक पर नजर जो है वो ड्रोन के जरिए रखी जा रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो विवादित इमारत है जहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है, उसके आसपास घरों पे किस तरीके की मूवमेंट है, गलियों में कितना फुटफॉल है, लोग इकट्ठे तो नहीं हो रहे, हर एक बारीक से बारीक जानकारी जो है वो ड्रोन के जरिए ली जा रही है। Rapid Response Force, PAC and local police was deployed at every major crossing to prevent any flare-up. In November 2024, Sambhal witnessed violence during a court-ordered ASI survey of the Shahi Jama Masjid due to a petition filed claiming the mosque was originally a temple. An alleged drone attack deep inside Russian territory has triggered fresh tensions in the Ukraine conflict. Moscow claims that President Vladimir Putin's residence was targeted in this strike, accusing Ukraine of attempting to strike at the very top of Russia's leadership, while Prime Minister Narendra Modi has urged both sides to pursue diplomacy and while Ukraine flatly denies any involvement in this strike, accusing Moscow of staging this incident to spread disinformation. Here's more. An attack in the heart of Russia. Moscow claims Russian President Vladimir Putin's residence in the Novgorod region was targeted in a strike, and the Kremlin is pointing fingers at Ukraine. Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. Lavrov confirmed that all drones were successfully intercepted and destroyed, with no casualties or property damage reported. While Prime Minister Narendra Modi expressed his concern and urged the conflicting parties to choose the path of diplomacy. On the other hand, Ukraine has strongly rejected Russia's claims of an alleged attack, accusing Moscow of fabricating the incident and spreading disinformation. US President Donald Trump has also criticized the alleged attack during a telephonic conversation call with Russian President Vladimir Putin. President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. That's no good. It's no good. Russian officials don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. But this is not the right time. It's one thing to be offensive, because they're offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров Мар-а-Лаго
с украинской делегацией. В их подаче, то есть подаче американцев, в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня. These recent attacks have hampered the already strained relationship between the Russia and Ukraine, where a peace deal seems far-sighted. And that's all from my side on 6 Stories at 6. We'll be right back with breaking news at 6:30. Thanks for watching.